Okay, let us start. Just a second. One second. So let us start. See, Jim, we discussed quickly last class because we have not started our syllabus yet. So syllabus का मैं detail discussion करते हैं. So we'll start with the section A, paper 1 रो. So section A होची food and nutrition. There are if you'll see initially there are two chapters. गोटे होची study of foods, out होची study of nutrients. Study of food वो detail कही देती कौन कौन हमें पढ़िया कही कि study of nutrients. See, first demo कौन कहते कि we may not be going in a very chronological way because what I feel कि जेमिति आपन को बुझिया पे convenient अधिक हुए because it's not all about only understanding, it's about linking the things and what you can how you can better remember the facts. Okay, so say हिसाब रे हमें पढ़िबा. We'll start with the chapter 2 and chapter 2 and chapter 3 will go simultaneously. ठीक अछि ना. तो chapter 1 रो as such किछि relevance नाही ए सब रो understanding नाही. जदि कोनोसी relevance रहिबो जो जगह रे तो I'll don't worry for that. I'll make sure first you understand the basics, then we'll go to the like other detailed things in the subsequent chapters. Okay, so based on that, let us start with the chapter 2. Chapter 2 रे कोन अछि आपनकर classification, sources, functions, requirements and deficiency of protein. Okay, first protein अछि, then fat अछि, then carbohydrate अछि. Second chapter, third chapter कौन कहूची utilization of food. सही carbohydrate, सही protein, सही fat रो तार digestion केमती होची, तार absorptions केमती होची और तार utilizations केमती होची. ठीक अछि. Based on that we are going to माने study. तो first हमें पढ़िबा कोन carbohydrate विषय रे. Okay, तो carbohydrate रो माने different sources कोन अछि, how carbohydrate, why carbohydrate is important. Then we'll move to the digestion, absorptions and utilization of carbohydrate. Okay, in that way we are going to proceed. So जो भी जिनसे हमें क्लास में डिस्कस करिवे, so make sure you are understanding all the things. If at all किछि बुझी परनाहति तो feel free to ask. I जहाँ भी हम पढ़िबा, don't keep all these things pending for a later period of time to remember. सेमती करंतुनी. जो जिनसे हमें पढ़िबा से जिनसे को आपण simultaneously पढ़ी जानतो. Okay, so that first reading रे सब जिनसे मत रहिबनी, second reading, third reading is required, and by the end of the process I mean the questions वगैरह discuss करिया, we'll try our the objective of this class will be to make you remember most of the things by the class itself. ठीक अछि. So without further delay let us start. तो प्रथम हमें देखिबा कि chapter 2 रो जो basic understanding जोटा हमको दरकार. See, it is visible to everyone. देखा होची. Yes, sir. एटा होम साइंस रो आपन को माने किछि जिंस जो जो माने रेफरेंस सोर्सेस रो जो मटेरियल्स रो आपन को कवर करिबी दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू. एटा तो होची आई थिंक समस्त पाखे थिबो केरला रो 12th क्लास रो बुक टा. आ जदि भी नाही देन आई विल बी शेयरिंग बाय द एंड ऑफ दिस क्लास इन द ग्रुप इटसेल्फ. आ ता सहित मु किछि हैंड रिटन नोट्स भी आपन को पढिबी चैप्टर 3 रो जो लिंक पार्ट गुडा को रहिला जेमति कार्बोहाइड्रेट और डाइजेशंस वगैरह. I hope it is already uploaded in the course जो भी study material sections of the app itself. कहीं कि मैं already share कर देती ही जाई थी बा कथा. If at all it has not been uploaded, then I'll ensure it should be uploaded by the end of this class. Okay.
without further delay, let us start with this. So, 8 आपण कौन पढ़ियार अछि? If you'll see the chapter 1 itself, it is the basic nutrient. Basic nutrient तो सब किछि पढ़ियार नहीं, को जिनसे पढ़ियार अछि, I'll be telling you. प्रथम जिनस हम बुझिबा माने जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ए सब जिनस कौन व्हाट दीज थिंग्स आर कॉल्ड इन जनरल इन द नॉर्मल नोमेनक्लेचर इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स ओके व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स ର बेसिक डेफिनेशंस भी टिके देखंतु दैट विल बी हेल्पफुल तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट बुझिया पूर्व प्रथम हम देखिया को पड़िबो कि न्यूट्रिएंट कोन पय दरकार न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए बेटर हेल्थ जस्ट वन सेकंड ओके सो न्यूट्रिएंट ର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए गुड हेल्थ तो प्रथमे हेल्थ कौन हेल्थ एज कौन से हेल्थ रो डेफिनेशंस आपनकर सिलेबस रे मेंशन हेनी दिस इज रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर राइटिंग आंसर्स बिकॉज बहुत टाइम रे आपन को क्वेश्चन सपोज ये थेरापेटिक न्यूट्रिशंस हो किंबा आपन नॉर्मल न्यूट्रिएंट हो बा माल न्यूट्रिशंस हो देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स आर देयर सो यू नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट अदरवाइज इंटरव्यू पाई मते बहुत इंपोर्टेंट तो डब्ल्यूएच हमें नॉर्मली हमें हेल्थ काहा को कहू हेल्थ हमें कहू कि okay any type of जदि हमें disease free conditions that is called the good health no it is not like that WHO कोन कहि WHO ओटे detailed माने टिके broader aspect रे health को define करछि if you can see over here WHO defined the health is a state of complete physical mental and social well-being not only merely the absence of any disease or infirmity it is not like that कि केवल disease नहीं बा कोनोसी प्रकार infirmity नहीं हम देहरे तो हमें healthy conditions live करछु no this is only the physical part of the health other than that गोटे mental part रहिला गोटे social part of detail हमें देखिबा कि health रो components कोन आछी you can see the dimensions of the health just below that so these are physical dimensions mental dimensions social dimensions there are spiritual dimensions emotional dimensions vocational dimensions there are lot many dimensions are there okay so what are the things you don't need to remember everything physical रो simple कथा होउची आम बॉडी रो जे कोनोसी भी गोटे पार्ट अछि ओके जे कोनोसी ऑर्गन अछि सो आउट माने जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन हो बा इंटरनल ऑर्गन हो जेतबेले सी तार ऑप्टिमम कैपेसिटी रे फंक्शनिंग करूची देन इट इज कॉल्ड द फिजिकल डायमेंशंस परफेक्ट फिजिकल डायमेंशंस ओके सो दैट इज व्हाट इट इज अ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ओके परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी रो अर्थ ऑप्टिमम कैपेसिटी रो सहित सब प्रकार फिजिकल ऑर्गन हमरो परफॉर्म करछथि देन कमिंग टू द मेंटल what is mental आमे जनरली कोन कहू कि मेंटल हेल्थ ता भलो नाही ओके आजिकली मेंटल हेल्थ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक एंड लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन बिकॉज डिस्पाइट एवरीथिंग इन आवर लाइफ वी आर समटाइम्स मेंटली नॉट दैट सैटिस्फाइड you don't have a disease conditions you have your जो भी जिनसे आपन को material positions you have but still you are not mentally satisfied or mentally happy के all depression feel करछु so these type of things if at all it is there then we can say there is a problem with respect to the mental dimension of the health okay so mental dimensions hame kon कहू छु it is a state of balance it is a state of balance between the individual निजे आ निजो बाहर जो जिंस हमें देखु छु okay and outside surrounding world ए भितरे जो गोटे बैलेंस मेंटेन हवा दरकार then only the mental dimensions will be perfect okay coming to next one that is called the social dimension सोशल डायमेंशन रो अर्थ कोन हमें कहू छु ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल आम भितरे आ जो रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम रहिला किछि विशेष डिफरेंस नाही the only difference we can say is the spiritual social dimensions because we are social beings आपन को जीवन में सब किछि देई देबे but you will be deprived of the social contacts so we cannot survive in our fullest manner okay it is normal जिंसो तो सेठी पे हमें सोशल डिमेंशंस कोन कहू छु हम गोटे सोशलाइजेशंस रो गोटे यू कैन से आ गोटे फंडामेंटल राइट्स अछि कहू छु दैट इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल so social dimensions is the well-being or it is an harmony it implies the harmony and the integration with the individual and तार society रो अर्थ कोन society रो बहुत मीनिंग आस परिबो आपन को
माने जदि आमे निजु को गोटे इंडिविजुअल कंसीडर करछु हम फैमिली मेंबर्स मते सोसाइटी रो बेसिक एलिमेंट रे स्टार्ट होचंती ओके सो देयर इज अ इंडिविजुअल देयर इज अ फैमिली देन देयर इज अ सोसाइटी इज एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड द सोशल डायमेंशंस और द सोशल बीइंग सपोज एबे जनरली आमे सोशल डायमेंशंस आपन कहबे घर लोक को केमती कंसीडर करिया फैमिली को केमती कंसीडर करियो बिकॉज़ जस्ट सी older age रे I mean the later stage of the discussions you will come to know the different problems of the family so in that there is a problem that is called the older age problems कोन अछि से जगह रे कोन हम देखु social isolations हम देखु see in which age we are living we are one of the important factor or we are one of the important member of the society ठीक अछि friends मानक पाखरे हो family रे हो get together रे हो जे कोन जिंस रे but think of the older age persons हम घरे हम जहा भी माने वयस्क लोक अछंती जनरली कोन करू से मानकू आमे नॉर्मल जो डिस्कशंस हला नॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हला बस छोटो छोटो जो हैप्पीनेसेस गुडा को होची हम लाइफ रे ताको हमें जनरली तांको सहित शेयर करिया भूल जाओ बस हमन को इन्वॉल्व करिया भूल जाओ से भीतर ओके सो इट इज वन ऑफ द सोशल यू कैन से आइसोलेशन ओके so these are the problems that you can will be discussing later on so social dimensions ro arth kono gote individual ro socializations ro gote rights achi gote need achi if at all that socialization need is compromised or curtailed then the social dimensions of the health is not optimum okay jemti ame kon dekhu che north eastern you must have heard of these things कि नॉर्थ ईस्टर्न रो जो माने जो लोक गुडा को आसंती दिल्ली साइड रे बा अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स नॉट ओनली नॉर्थ इंडियन एनी अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री देन से माने गोटे डिस्क्रिमिनेशन फेस करंती ओके so in that discrimination so what is happening their socialization is curtailed okay or compromised in that case this is also something next coming to the spiritual dimension so spiritual dimensions रो meaning कोन होची so it is spiritual जति हमें कहू ना कि spiritual development तो spiritual development कोन help करे it helps to माने जो कोन देखि हमरो जो it is something that is intangible there is no measurement as such कि हां ठीक अछि कोन से BMR measure कर देले height measure कर देले weight measure कर देले जो भी माने it's not a quantifiable things okay but it is internal to us and it is very much important right तो spiritual dimensions गोटे कोन कोची गोटे purpose to the life the fulfillment of the life provide करे so that is the spiritual dimensions of the health so it is an aspect of the individual it is an aspect of the individual which reach out and strives for the meaning and the purpose of the life so spiritual dimensions provide the purpose of the life or the self actualizations हमको provide करूची coming to the emotional dimensions जनरली हमें बहुत नॉर्मल वे ऑफ कन्वर्सेशन जो बहुत टाइम डिस्कस करू संग मान को भी कहि दू कि नहीं ठीक अछि सेरी इमोशनली अनस्टेबल व्हाई इमोशनली अनस्टेबल दैट मींस द इमोशनल डायमेंशन सो व्हाट इज जदि हमें कहू कि इमोशनली अनस्टेबल बा तार माने इमोशनल इंटेलिजेंस एते भलो डेवलप हेई नहीं बा ही इज नॉट दैट कॉम्पिटेंट टू handle his emotions so what does it mean by the emotion are simple the feelings it will it refers to the feelings so emotional development केमती हवा दरकार सेटा भी हमें पढिबा परवर्ती माने पार्ट 2 रे इमोशनल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस हमें पढिबा इवन एडल्ट्स भी अछि एंड चिल्ड्रंस भी अछि तो इमोशनल जो को डेवलपमेंट केमती हमें जणाउ कि माने कोन हेले हमें कहिबा सपोज आपन को मु कहबी नै ठीक अछि यू आर नॉट इमोशनली डेवलप्ड तो व्हाट ऑन व्हाट बेसिस आई कैन से यू आर नॉट इमोशनली डेवलप्ड और यू आर नॉट बिहेविंग ए मैच्योर काइंड ऑफ इमोशंस व्हाट काइंड ऑफ थिंग कि नॉर्मली हमें कोन परसीव करू एनी आइडिया कि हमें को टाइप रे जिंस को हमें इमोशनल स्टेबिलिटी कहिबा See, emotions are very normal thing, or these are the simple the feelings. Feelings there are thousands of positive emotions and thousands of negative emotions. If I'll say on a very realistic way, the negative emotions, negative thoughts, negative feelings are more compared to the positive thoughts and the feelings. But emotional development केतेबेला मैं कहू जितेबेले you will be able to express your emotions in a positive way. Okay, so that behavior that माने जो भी बिहेवियर आपण शो करचंती टू एन इमोशन if that behavior is acceptable in the society so that is called the emotional development okay so see suppose kali आपण माने chair रे बसचंती as a tahsildar and all of a sudden got some any news that is emotional for you okay so
how you are supposed to behave on that chair. Okay, you should not outburst, you should not on your anger, on your you can say sorrowness, he ସବୁ ଜିନିଷ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ. Okay, so if at all you are behaving in that way, it is called ମାନେ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ସପୋଜ ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, with your friends, with your family, there if you are suppose breaking down, if you are crying or anything, that is acceptable. Okay, that they won't be judging you. So it is according to the situation, or according to the there are a set of situations which is acceptable as per the in the eyes of the society. So you are behaving according to that. Okay, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, that is different thing, how you are supposed to behave. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ତହସିଲଦାର ଜଣେ ପୁଅଟେ ହଉ ଜଣେ ଝିଅଟେ ହଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛ, ସେଇଠି ଆଉ ସେଇ କହିବ ମୁଁ ବାବୁଗିରି ଦେଖେଇଲେ ତ ହବନି ନା, they have a different thing. Yes, showing sympathy to the, no, that is different thing, that is the attitude that is being expected from you. It is not showing sympathy. I am just telling ki emotions development or artha kona, emotional development artha hochi emotions, you are being exposed to the some kind of feeling, and how you are expressing ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ମିଳେ ବା ଷ୍ଟିମୁଲି ମିଳେ, we always react to the stimulus. ଆମେ କିଛି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଯଦି feelings ଆସୁଛି, ସେ feelings ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ react କରୁଛୁ. The reaction should be as per the norms of the society, and these norms are not static obviously. With the progress of the times, and norms ଗୁଡାକ change ହଉଛି. Okay, because ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କି suppose 50 years if you go back in the timeline, then women's ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବି societal norms ଥିଲା, ଆଜି date ର societal norms has changed. Okay, so that will change in the process of the time, but you should what I am trying to say ki emotional dimensions ର meaning କଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କି what is emotions. Emotions are the simple feelings and how you react to the emotions. Okay, if ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିବା emotional health ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, if you are able to handle your emotions, then only you are called like emotionally stable. In terms of the emotional dimension of your health, you are stable, right? Coming to the vocational dimension, what is vocation? Vocation ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଆମେ ମାନେ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛେ, କିଛି earning ପାଇଁ କିଛି activity କରୁଛେ, କିଛି business କରୁଛେ, everything is vocational dimension. Vocational dimensions ର କଣ requirement ଅଛି? Why? Just whatever coming to your mind, ଆମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି ବା କାହିଁକି ଆମକୁ business କରିବାର ଅଛି? What are the needs? What are the needs? Why you want to pursue this one job or any business? So to maintain a good lifestyle and yes, right. गोटे को जिंस हो गला कि आपन कोटे livelihood रो गोटे दरकार. Anything you need to earn something so that you can manage your livelihood, and the managing the livelihood can be of different dimensions. Subsistence management गोटे अछि कि हां ठीक अछि, hand to mouth हमें सेति के earn करले जेति के हम basic needs fulfill करना. Otherwise sometimes we need more of a wealth so that we can upgrade our status from lower to middle, lower middle, then middle class. हाँ, economic status. Yes, right. तो societal status. ठीक अछि. ता सहित आउ कोन? See, you can suppose आपण OS करछंती, your salary will be something around 70 or 80,000. ठीक अछि. तो don't you feel like there are other jobs also that is providing more of a salary than this administrative service? Then why administrative service only? Why? One is livelihood, that is fine. Other than that, why? There are two basic requirements. One is an economic perspective, that is just that is called, what is? कौन कहले कथा था? Esteem needs, physical needs, social needs. See, jobs always provide you two things. One is an economic requirement, another is the social acceptance. Okay, social status. Social status is always associated with the vocational, you can say, options you have opted off. Okay, যদি ଆପଣ OS ଅଛନ୍ତି, your ମାନେ OS ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ status, IAS ଅଛନ୍ତି further status. Okay, you are engineer, another status, you are doctors. So there are variety of social status that you are being offered based on the job you have or the vocation. To feel satisfied in life, that is different thing, and satisfaction, dissatisfaction changes with the progress of the time and then the position of the, you can say, life itself, because
फैमिली साइकिल जो आप देखिए तो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम एस्पिरेशनल लाइफ थाए गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे एस्पिरेशनल लाइफ रो रिक्वायरमेंट चेंज हुए टुवर्ड्स फैमिली रो वेलबीइंग आड़ो तो दैट चेंजेस विथ द प्रोग्रेस ऑफ द टाइम but social dimensions vocational dimensions always provide you two things one is a monetary and second is your acceptance okay so job जो जिन अपन करछन सेटा अपन गोटे सोसाइटल वैल्यू पोजेस माने हेल्प करूची द्वारा ठीक अछि so these are the 6 dimensions that we have studied related to the health not that important I am saying but these are the value additions that makes the difference between normal answer writing and adding more perspective to the question okay तो ये जिनस गुड़ा ध्यान रखिए बिकॉज दीज आर नॉट सी वन मोर थिंग आम बेले बेले कौन भाबू आई डोंट नो इफ यू हैव केप्ट दैट अप्रोच और नॉट कीप योर अप्रोच इन होम साइंस वेरी ब्रॉड ओके एमती नाही जो जिनस आम पढ़ुचु बर्तमान एटा केवल ए पर्टिकुलर चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस असले आम लिखिबू नॉट लाइक दैट इफ एट ऑल यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चंस वेयर यू फाइंड दीस थिंग्स कैन बी like implemented this can be value added you have to add this okay other than that at the end of the examination you will say like no questions has not been asked from the syllabus itself no home science बहुत ही mix करे questions को so you should not bound yourself to the subject itself or to the topic itself okay you should go beyond the topic and try to find wherever these particular things can be incorporated okay so accordingly let us this is the health wala dimensions hame dekhile ki we have physical dimensions mental dimensions social dimensions spiritual dimensions emotional dimensions and vocational dimensions okay आमे जिंस काहे की पढ़ले बिकॉज़ न्यूट्रिशन जेतोले पढ़ुतले आमे कोन कहले न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड टू हैव ए गुड और द हेल्थी लाइफ health ro definitions ame dekhile as per the WHO then different dimensions of the health okay let's coming to the nutrition ro requirement ape dekhite what is nutrition itself nutrition is defined as the food एटा आमे न्यूट्रिशन हमको कोटू मिले न्यूट्रिशन फूड रू मिले हमको this we obtain from the food nutrition includes everything that happens to the food from the time it has been taken until it is being used and the various functions in our body जेतों हमें खाइबा स्टार्ट करछु that starts the it is nourishment not nutrition okay मोटी भूल रे कहि देली nourishment रो अर्थ होची the process in which the food itself is utilized बुझि पछन खाइ देले हमें किछि माने किछि जिंस खाइबा खाइले तो तार गोटे पर्पस अछि ओके पर्पस कोन अछि कि सी हम बॉडी को किछि प्रकार सपोर्ट प्रोवाइड करिवो तो एनर्जी प्रोवाइड करि पारे बिल्डिंग रे माने बॉडी बिल्डिंग रे हेल्प करि पारे प्रोटेक्टिव फूड हिसाब रे किछि जिंस को हम यूज करूछु देयर लॉट मेनी थिंग्स विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन तो नेक्स्ट व्हाट इज एन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नॉट रिक्वायर्ड यू जस्ट कीप दिस पार्ट माल न्यूट्रिशन जदि आपण 8 न देखुछथि देन हां किछि पचोटले का डाउट लेटी पचा देबे एक्चुअली I may not be seeing your messages. Is this a big book? Kerala NCRT. I don't know. It is NCRT or what? It is Kerala. Kerala NCRT. NCRT will be one book only, na? Okay. This is Kerala Home Science 12th class book. The PDF is there with me. I can share in the Telegram group. Okay. Just after the class, I will be sharing this. Okay. So, what is malnutrition? Okay. तो जेमते हमें कहले न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड हम बॉडी रो नॉर्मल फंक्शनिंग पई न्यूट्रिशन दरकार पड़ुची जदी सही न्यूट्रिशन एज पर द रिक्वायरमेंट न हुए देन इट इज कॉल्ड द मालन्यूट्रिशन साधारण भाषा रे ओके तो मालन्यूट्रिशन केते बडे जनरली हम मालन्यूट्रिशन को डेफिशिएंसी वर्ड रे बुझू बट इट इज नॉट द केस एटा आपन को गोटे ऑप्टिमम वैल्यू अछि से ऑप्टिमम वैल्यू रो ईदर साइड जदी हमरो माने हम कंजम्पशन को जदी हमें डेविएट करूची देन इट इज कॉल्ड द malnutrition so it is a optimum if you are consuming more over nutrition then also it is a malnutrition okay if you are consuming less then also it is malnutrition so from the optimum value the deviation in the either side of the scale can be termed as the malnutrition okay so malnutrition means it is you can say it is undesirable kind of the nutrition that leads to the ill health malnutrition results from the lack of or the excess imbalance of the nutrient in the diet okay so it includes simply कहली it can be under nutrition sei pare can be over nutrition madhya hei pare okay so this is the you can say pretext or the brief overview you have to go through before you jump into the topic itself okay a nutrient part re nutrient are the component of the food that is needed by the body in adequate amount
कौन पे दरकार एडिक्वेट आम देखंतु न्यूट्रिएंट है खाद्य भितर तो खाद्य रे न्यूट्रिएंट आम कौन पे दरकार बिकॉज बॉडी रो किछि रिक्वायरमेंट अछि जेमति कि ग्रोथ अछि रिप्रोडक्शंस अछि नॉर्मल हेल्थ अच्छी आमे डिफरेंट टाइप देखिए जेतोळे आमे कार्बोहाइड्रेट कथा कहूचे तो कार्बोहाइड्रेट जनरली एनर्जी प्रोवाइड करे प्रोटीन कौन करे प्रोटीन हमरो बॉडी बिल्डिंग रे हेल्प करे फैट कौन करे फैट रे किछि रिक्वायरमेंट्स अछि जेमते कि बॉडी को किछि टाइप रो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशंस करे देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो जेतोळे आमे स्टार्वेशन कंडीशंस को जाउची फैट बर्न हुए आ सेट भी किछि एनर्जी बाहरे तो फैट इज आल्सो रिक्वायर्ड अदर देन दैट किछि जिंस अछि विटामिन्स मिनरल्स अछि जोटा हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहूछु प्रोटेक्टिव फूड्स रो काम कोन आसर से माने बॉडी रो कोन से बिल्डिंग करंतिनी किंतु बॉडी रो अन्य फंक्शंस को जेमति डिजीज कंडीशंस को दूर रखिया पई हमर माने डाइजेशन बेटर करिया पई एंटीऑक्सीडेंट हिसाब रे किछि माने न्यूट्रिएंट्स अछि से माने काम करंती सो देयर आर वेरी वेरियस रिक्वायरमेंट्स जेमति कि वाटर कथा कहउछन तो वाटर रो रिक्वायरमेंट कोन यू कैन सी ओवर हियर एंड यू शुड रिमेंबर दिस माने ए जो पर्टिकुलर टेबल को मन रखंतु व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू कैन पुट दिस इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर आल्सो गोटे मेल केस रे द वाटर जदी these are the nutrient composition in the human body गोटे मेल बॉडी भितरे वाटर रो कंटेंट होची अराउंड 60 to 62% whereas in female it is 54%. प्रोटीन देखंतु माने मेल के सेटिक अधिक रुहे it is 17% whereas in women it is 15%. The highest difference is in terms of the fat male case only 14% था but in case of the female it is around 25%. Minerals are almost same 6 and 5%. Carbohydrates are only 1% and vitamins are very negligible. Vitamins are very negligible in quantity but these are very much essential. Okay. So this is the you can say broader table you can remember. It is the nutrient composition, percentage composition in a human body segregated in terms of male and female. Okay. Coming to the carbohydrate, this is the topic where as per the syllabus, the topic starts over here, carbohydrate. What we understand by the carbohydrate? So carbohydrate is one of the component of the food. जैसे carbohydrate देखिया, protein देखिया, then fat देखिया, likewise. तो कार्बोहाइड्रेट जनरली इज वेरी अब्युंडेंट इन द नेचर इटसेल्फ काहे कि नेचर रे बहुत आपन को क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट मिलबो बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Okay, photosynthesis is it's common everywhere, so that's why you can find carbohydrate in abundance. ठीक है जी, just one second. हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट is the principal constitutions of our diet. Normal देखो आपण भात खाउछंती रुटी खाउछंती बा अदर किछि भी सीरियल्स खाउछंती से जो भी माने मिलेट्स कंज्यूम करन चाहा भी करन तो प्रिंसिपल जदी से पर्टिकुलर फूड को जदी आपण भाग करिवे से भितर जदी माने कंटेंट्स को आपण जदी डिटेल्स देखिया को चेष्टा करिवे तो कार्बोहाइड्रेट रो कंटेंट ही सब तो हाईएस्ट थाए. So that's why it is the principal component. जेतोळ आपण खराडा में खाई बसछु तो भात रो क्वांटिटी ते अधिक रहउछि ना ता ऊपर डाली हमें ऐड करछे बट व्हाटएवर तो द मेजर कंपोनेंट और द constituent of the food normal diet is always highest in terms of the carbohydrate. Okay, so it is most important. The carbohydrate importance kono it provides the main energy source. It is the energy source of our body. Okay, so carbohydrates are mainly present in the plant food. जे कौन सी plant food रे आपन को मिल जिवो because just I told you because of the photosynthesis process the plant itself produces the carbohydrate. ठीक अछि बुझि परछन समस्त कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करछि प्लांट और प्लांट फूड रे आपन को मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट मिल जाय और एटा होछि मेजर सोर्स ऑफ योर एनर्जी. ठीक अछि किछि एक्सेप्शंस मध्ये अछि जेमति कि आपन देखंतु गोटे होछि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन कोठी मिले मसल रे थाए. ओके, एंड लिवर रे भी थाए ग्लाइकोजन स्टोर ही की थाए ताकू ग्लाइकोजन जस्ट हमें देखिया टिके पड़े तो ग्लाइकोजन मसल्स रे मिले. लैक्टोज आपण सुनथिबे लैक्टोमीटर समस्त सुनथिबे मिल्क रे केते पानी अछि केते खीर अछि ताको मेजर करिया पे लैक्टोमीटर यूज करू तो लैक्टोज इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द मिल्क. ओके, तो लैक्टोज एंड राइबोज जेतेबेले ह्यूमन रो कोनोसी प्रकार नॉट ओनली ह्यूमन कहली एनी एनिमल सेल रो जदी राइबोज जदी हमें देखिबा तो ए जो तीनटा कंपोनेंट ला गोटे ग्लाइकोजन इन द मसल lactose in the milk and the ribose in the animal cell. So these are the three non-plant part where you can find the carbohydrate, right? तो कार्बोहाइड्रेट को हमें सिंपल सुगर कहूछु केमति से टाइप रो कार्बोहाइड्रेट हे पारे तो these are the simple sugar माने से तार जदी क्लासिफिकेशंस आपण देखिबे तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी मोनोसैकेराइड हे पारे डाइसैकेराइड हे पारे एंड पॉलीसैकेराइड हे पारे नाही कहूची एंड टिके देखि देबा ता विषय रे व्हाट इज एन मोनोसैकेराइड.
तो मोनोसैकेराइड रो मीनिंग होची सिंपल सिंगल गोटे ही सुगर अछि सैकेराइड रो अर्थ होची सुगर मानतु ठीक अछि तो monosaccharide is the simplest form of the carbohydrate which cannot be hydrolyzed to simpler component further hydrolyzation हे परिबो नाही what is hydrolysis प्रथम कथा गोटे बड़ कंपोनेंट जदि कंपाउंड गोटे अछि से बड़ कंपाउंड जेतले ब्रेक हुए जो प्रोसेस रे सब ब्रेक हुए से प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहउछु से कथा एटी कहउछि कि मोनोसैकेराइड को फर्दर आमे भाग करि परिबा नाही तार होची तार आउ हाइड्रोलिसिस हे परिबो नै जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड हाइड्रोलिसिस बिकॉज़ जेतले परवर्ती स्टेज में पढिया से लिखा हितिबो हाइड्रोलिसिस रे एतिकीटा कंपोनेंट बाहरला ये बाहरला तो यू वोंट बी कंफ्यूजिंग व्हाट इज एन हाइड्रोलिसिस ओके तो ऑल कार्बोहाइड्रेट शुड बी रिड्यूस टू द दिस माने ए सिंपल फॉर्म को प्रथमे एबे से डाइसैकेराइड हो पॉलीसैकेराइड हो जदि हमें कंज्यूम कला तो हमें देखि कंज्यूम करने ना कि हमें नहीं कि हां हमें केवल मोनोसैकेराइड कंज्यूम करछु नॉर्मली हमें जेतोले नॉर्मल फूड का हमें कंज्यूम करछु तेरा मोनोसैकेराइड न थाए सेगुडा सब बले डाइसैकेराइड बा पॉलीसैकेराइड फॉर्म रे थाए किंतु हम बॉडी भितरे एब्जॉर्प्शंस जो होची डाइजेशन प्रोसेस जो होची केवल ही परिबो मोनोसैकेराइड फॉर्म रे एब्जॉर्ब बॉडी भितर को केवल मोनोसैकेराइड हबो तार अर्थ अन्य जो दुईटा कंपोनेंट रहिला से प्रथमे भाग हबो मोनोसैकेराइड फॉर्म को so that is what written over here all the carbohydrate should be reduced to this form in the sense monosaccharide form for the absorption and utilization right so these monosaccharides of the nutrient are important कौन monosaccharide अछि हम पाखे तीनटा monosaccharide अछि गोटे ग्लूकोज समस्त जानिछु next is the fructose next is the galactose okay काहे कि just you it's not important for your माने एग्जाम बट आमे जतले एनर्जी हमर लॉस होची बाहर बुली के आसीले देह खराब होची कोन हेची मेडिसिन्स नोचे तो से समय घरे कोन कोन ग्लूकोज टिपी दे कि घरे को चली आलू टे खाइ दे बिकॉज़ आलू रे भी कार्बोहाइड्रेट अछि कि ग्लूकोज रे भी कार्बोहाइड्रेट माने कार्बोहाइड्रेट अछि तो व्हाई वी वांट टू कंज्यूम ग्लूकोज बिकॉज़ ग्लूकोज जदि हमें पिउचे ताको हमें इंस्टेंट एनर्जी कोचे इंस्टेंट एनर्जी केमती बिकॉज़ ग्लूकोज ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछि यस ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछि तो आर ये ऑलरेडी मोनोसैकेराइड अछि तार कोनोसी प्रकार डाइजेशन दरकार हबनी तो रेडिली यू कंज्यूम देन इट विल बी डिफ्यूज टू योर माने ये तार एब्जॉर्प्शन सही जीवा हम बॉडी माने पोर्टल सेल्स भीतर को एंड दे कैन यूटिलाइज्ड इनटू द एनर्जी रिक्वायरमेंट बुझी परले तो सही पे अवश्य ठीक अछि आपण तो कहि परले जे फ्रुक्टोज टी खाइ दे तो अवेलेबल नहीं नथिले कहि ताते फ्रुक्टोज भी टी खाइ दे देन ओके सी सो ग्लूकोज को कौन कहते ग्लूकोज को हमें ग्रेप सुगर भी कहू पर डेक्सट्रोज भी कहू नॉट इंपोर्टेंट दैट मच यू शुड रिमेंबर जस्ट ग्लूकोज मन रखंतु तो ग्लूकोज इज कॉल्ड द डेक्सट्रोज और द ग्रेप सुगर सो इट इज ए कार्बोहाइड्रेट करेंसी को हमें कार्बोहाइड्रेट करेंसी मध्य कहूछु बॉडी रो ग्लूकोज कैन इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब जोटा हम बर्तन आपण कहउथिली कोठी थाए जे कोनोसी मीठा जातीय फल एनी काइंड ऑफ स्वीट फ्रूट्स ओके अदर देन दैट आपन को जो वेजिटेबल्स जो गुडा को स्वीट लागे टिके जेमति कि स्वीट कॉर्न कैरेट ओनियन माने जो जोटा हमें जो छोटे छोटे ओनियंस गुडा जोटा टिके स्वीट टेस्ट थाए से बना करो तो दैट ओनियंस हनी दीस आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ योर ग्लूकोज ओके तो जदि हम बॉडी रो 100 ml ब्लड उठी की देखिबा से 100 ml ब्लड भितरे ऑलमोस्ट 100 मिलीग्राम ऑफ सुगर यू विल फाइंड ओके जेतोला हमें कुछ सुगर कंटेंट हम बढ़ी गला जो सुगर हमें टेस्ट करूचे तो दीज आर द टेस्टिंग वी यूज्ड टू डू ओके तो दिस इज सुगर कोटे मोनोसैकेराइड गला नेक्स्ट मोनोसैकेराइड होची फ्रुक्टोज कोठी मिले फ्रूट्स रे मिले नाही कोची इट इज आको में लेव्युलोज भी कहती फ्रूट सुगर मध्य कहू जेमते हमें ग्लूकोज को हमें ग्रेप सुगर कहलु सेमती फ्रुक्टोज को लेव्युलोज किंबा फ्रूट सुगर मध्य कहती it is sweeter than the glucose to अधिक sweet था इटा तो fructose is also readily absorbed in the body honey आउ कौन से प्रकार ripened food रे आपण को एटा abundantly मिले fructose कथा कहूची मु next galactose होची आउटे टाइप रो मोनोसैकेराइड बट galactose को आपण नॉर्मली आपण देखि परिबे माने इट इज नॉट प्रेजेंट freely in the nature but it is widely distributed in the combined state galactose सबले combine ही कि थाए कहा सहित थाए जनरल देखंतु गोटे होची लैक्टोज अछि लैक्टोज कोठे मिले मिल्क रे मिले तो लैक्टोज भितरे the sugar present in the milk it is the component of जो लैक्टोज को हम भागो करिबा से भितर ग्लूकोज और galactose बाहर ठीक अछि so that means there are three things we have stated
गोटे होची ग्लूकोज कथा देखिले जोटा रेडिली अवेलेबल अछि ओके एनी टाइप ऑफ जो वेजिटेबल्स कथा कहले बा स्वीट टाइप ऑफ फ्रूट्स कथा कहले नेक्स्ट असला फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज ताको फ्रूट सुगर कहूछु जोड़ा हनी राइप्ड फ्रूट्स से गुडा को मिले गैलेक्टोज गैलेक्टोज भी गोटे प्रकार मोनोसैकेराइड बट एटा फ्रीली नेचर रे तो आपन को मिलिबो नाही ये कोन करे कंबाइन हे कि थाए जेमति के एग्जांपल होची लैक्टोज गोटे कंपोनेंट लैक्टोज को जतोला हमें डिवाइड करछु लैक्टोज ता होची गोटे डाइसैकेराइड जोटा मिल्क में मिले तार जतोला हमें भागो करिबा लैक्टोज को सेतोला हम ग्लूकोज आ गैलेक्टोज मिलिबो ओके एति पर्यंत काहर डाउट एटा मोनोसैकेराइड सरला लेट अस गो टू द डाइसैकेराइड. So disaccharides are formed by the combination of two monosaccharides. Dita monosaccharides जेतोले मिसिबे सेतोले disaccharide produce होबो. Okay. जदि हमें they split into the simple sugars by the मु कोन कहतली जेतबेले गोटे बिकर कंपाउंड अछि से जेतोले भाग हबो से प्रोसेस को हमें हाइड्रोलिसिस कहूछु. जनरली हाइड्रोलिसिस केमति होबो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रे हाइड्रोलिसिस है कि तापर बॉडी भीतर को एब्जॉर्ब होबो दैट इज नॉट दैट इंपोर्टेंट टोटी एसयू से हम मन रखिबा. तो the source is sorry एबे हमें जेमते में मोनोसैकेराइड रे हम तीनटा जिंस देखिले ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज सेमिति डाइसैकेराइड कोटोट देखिबा स्टार्टिंग विथ द सुक्रोज सुक्रोज ता मिले कोटी सुक्रोज को इन्वर्टेड सुगर मध्ये कहते इट इज कॉल्ड द इन्वर्टेड सुगर. तो सुक्रोज मिले कोटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज स्केल फ्रॉम द सुगर केन एंड द बीटरूट. सुक्रोज मिले सुगर केन और बीटरूट ता तो होची जो नॉर्मल सुगर आपण देखुचंती सुगर रे मैक्सिमम सुक्रोज थाए ठीक अछि. फ्रूट्स वेजिटेबल्स रे मध्ये स्मॉल अमाउंट रे थाए नॉट दैट इंपोर्टेंट इट इज कॉमन फॉर्म ऑफ द सुगर इन आवर डेली डाइट. नॉर्मल जो सुगर हमें खाउछु ताको ही हमें सोर्स ऑफ सुक्रोज कहि परिबा. ओके गोटे डाइसैकेराइड गला. नेक्स्ट इज द माल्टोज. माल्टोज को maltose sugar is formed in the cereal grain जो हमें cereals को consume करछे. cereals तो समस्त बुझछन ना जो staple diets हमें नोचू चाउल हैला गहम हैला किबा जो मांडिया हैला ए गुडा को सब cereal जातीय जिंस. ओके तो cereals गुडा को भितरे कोन थाए maltose थाए. ओके आउ ए माल्टोज को जेतोले भाग हबो जेतोले बिकॉज़ इट इज अ डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हबोनी ताको प्रथमे सिंपल फॉर्म रे माने मोनोसैकेराइड रे कन्वर्ट हबो तापरे से एब्जॉर्ब हबो. तो माल्टोज कोन कन्वर्ट हुए माल्टोज कन्वर्ट्स इनटू यस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज रे कन्वर्ट हुए. ओके हां कोन मु छाड़ देली ओके सुक्रोज ता छाड़ देली. हां सुक्रोज होची ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिसिले सुक्रोज हुए एंड जे माल्टोज को हमें देखिया माल्टोज को हमें जदी भागो करछे देन दीटा ग्लूकोज बाहरियो माल्टोज भीतर ठीक अछि. नेक्स्ट इज द लैक्टोज. लैक्टोज मो ऑलरेडी कहतली इट इज अ डाइसैकेराइड रेडिली फाउंड इन द मिल्क. एटा मिल्क रे आपन को मिलिबो. तो लैक्टोज को हमें जेतले भागो करिबा व्हाट यू विल बी गेटिंग ए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. इफ यू विल सी इन द ऑल द थ्री कॉमन एलिमेंट इज द ग्लूकोज. ग्लूकोज सब रे मिलुछि एठी देखंतु ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो सुक्रोज रु ही फ्रुक्टोज मिलुछि. देन माल्टोज रु कोन मिलला दीटा को ग्लूकोज मिलला. देन लैक्टोज रु कोन मिलला ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ठीक अछि. सो इट इज योर डाइसैकेराइड. कमिंग टू द पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड रे कोन होची इट इज मेड अप ऑफ बाय द मेनी यूनिट्स ऑफ द मोनोसैकेराइड. गुडाए मोनोसैकेराइड मिसी किसी फॉर्मेशन हिची पॉलीसैकेराइड रो. पॉलीसैकेराइड्स आर जनरली इनसॉल्युबल और वेरी फीबली माने बहुत कम मात्रा रे सॉल्युबल हबो वाटर रे ठीक अछि. वाटर सॉल्युबल न हेले प्रॉब्लम कोन हबो माने सी देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. किछि न्यूट्रिएंट्स जोटा वाटर रे सॉल्युबल हुए किछि न्यूट्रिएंट्स अछि जोटा कि फैट रे सॉल्युबल हुए. बट जनरली हमें सेमति ताको देखुना सब गुडा को हमें वाटर रे ही देखु. जेतबेला हमें विटामिन्स पडिबे सेतबेला हमें वाटर आउ फैट सॉल्युबल करके देखियो ठीक अछि. जस्ट एति के अपन देखंतु कि पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट रेडिली माने सॉल्युबल इन द वाटर ठीक अछि. तो पॉलीसैकेराइड्स भीतर कोन जिंस जाउची द लॉट मेनी थिंग्स नॉट एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर. जस्ट किछि किछि देखंतु जोटा होची गोटे होची स्टार्च. नेक्स्ट इज द डेक्स्ट्रीन ग्लाइकोज एंड डाइटरी फाइबर्स. ओके this much we'll limit our discussions to. What is starch? Starch होची plant kingdom माने it is found in the plant only. Starch ता केवल plant रे ही मिलिबो. तो starch component माने starch is composed of several hundreds of the glucose. माने hundreds of glucose जेतबेले interlink होची सेतबेले से starch formation करची. ओके
नॉर्मली आम देखी ना कि आलू काटिकी जो आपण छाड़ दो व्हाइट कलर जो बाहर जो माने ताकू आलू को धोइला परे तो सेटा कोन बाहरची दैट इज द स्टार्च दैट इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द पोटैटो ठीक अछि द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ द स्टार्च कोटी कोटी स्टार्च मिले जेमति कि सीरियल्स रे मिले केमिति जेतोला हम भात गाळू जोटा बाहर जाउची सेटा होची स्टार्च मिलेट्स रे मिले you got starch in the roots and the tubers type of thing आलू भी गोटे रूट आउट ट्यूबर भीतर जाउची रूट आउट ट्यूबर बुझुचंत माने जो भी पनीपरिया बा जो भी वेजिटेबल्स देखछन जोटा कि तार चेरो रे हुए बा ता चेरो जो माने चेरो पाखरे जो ट्यूबर्स गुडा केमती बॉल जाउ ठीक बाहर को आसे तो सही हिसाब रे थाए तो ताको रूट आउट ट्यूबर टाइप ऑफ फूड आमे कहूछु ठीक अछि एटा गला कोन स्टार्च नेक्स्ट कमिंग टू द डेक्स्ट्रीन what is dextrine dextrine is a group of substance formed during the breakdown of the starch जेतबेले स्टार्च रो ब्रेकडाउन हुए स्टार्च मु कोन कहली हंड्रेड्स माने हंड्रेड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ माने ग्लूकोज मिसी की हिची डेक्स्ट्रीन रे कोन होची जेतबेले स्टार्च डिकम्पोज होची व्हेन स्टार्च इज breaking down during the breakdown of the starch to the maltose during that process आम देहरे आम जो कंपोनेंट ता बाहर दैट इज कॉल्ड द डेक्स्ट्रीन ओके नेक्स्ट इज द ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन सेमती किछि न थाए ग्लाइकोजन सेमती बाहर ट्यूबर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेम यस तो ग्लाइकोजन सेमती एज सच किछि न थाए बाहर ग्लाइकोजन केमती हमें पाऊ बिकॉज़ हमर जो एक्सेस ग्लूकोज अछि हम बॉडी को जेतोला हमें जते ग्लूकोज खाउ सब ग्लूकोज रो रेडिली रिक्वायरमेंट न थाए जो एक्सेस एनर्जी हैला ताको हम बॉडी कोन करे ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट करी कि स्टोर कर दे इधर लिवर रे किबा मसल्स रे ठीक अछि तो सेहीटा को हमें कहउछु ग्लाइकोजन ठीक अछि ग्लाइकोजन इज द रिजर्व कार्बोहाइड्रेट दैट इज फाउंड इन द लिवर एंड द मसल ऑफ द एनिमल एंड द मैन इट इज समटाइम कॉल्ड आपको हमें एनिमल स्टार्च मध्ये कहउछु जेहेतु एटा रिजर्व बा स्टोर्ड हे के रहउछि ग्लाइकोजन को डायरेक्टली हमें यूज कर परिबा नाही एज ए एनर्जी पाइन इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज अगेन बॉडी रे अगेन ग्लूकोज रे कन्वर्ट हुई सी देन ओनली वी कैन यूज दिस so glycogen is formed that much okay next is the dietary fiber ए ग्लूकोज रो ग्लाइकोजन जो होची से प्रोसेस माने जदी इन केस हम देहरे ग्लूकोज रो ग्लाइकोजन ठीक भाबरे न हुई देन प्रॉब्लम कोन हबो what will happen हमें जो एक्सेस ग्लूकोज कंज्यूम कर देले जदी से ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट न हुई देन कोन हुई सर ब्लड शुगर बढ़ी जिवो त यस डायबिटीज ठीक अछि तो काहे की कन्वर्जन हबो नाही ठीक भाबरे काहे की परिबनी माने सेमती कंडीशन आसीबो ही काहे की इंसुलिन रो इंसुलिन ठीक कथा इंसुलिन रेजिस्टेंस सर हां दी रीजन सही पर इधर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन सीक्रेट होनी पैनक्रियास ठीक अछि अदरवाइज कोन होची जो इंसुलिन सीक्रेट होची क्वांटिटी रिमेन्स द सेम but the quality of the insulin has declined बुझी पड़छथि माने सही सपोज एबे 500 ml दरकार तो 500 मोंती रफली कहूची बुझिया पे 500 यूनिट दरकार तो 500 यूनिट्स ही सीक्रेट होची किंतु से 500 यूनिट रो जो क्वांटिटी ता जो क्वालिटी ता अछि तार जो माने यू कैन से ता जो पावर ता अछि सेटा कमी गला बट नाउ दैट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द एक्सेस ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन बुझी पड़छथि तो सही जो डायबिटीज मेलिटस को हमें कहूछु so that is the condition when the excess amount of glucose is not able to convert into the form of glycogen okay next is the dietary fiber कोन it is another माने it is a polysaccharide ए गोटे ग्लूकोज हे पारे हेमिसेल्युलोज हे पारे पेप्टिन हे पारे गम हे पारे बा किछि भी हे पारे एगुडा को समय में डाइटरी फाइबर कहूछु डाइटरी फाइबर गुडा को कोन पे इंपोर्टेंट इटा कोनोसी बॉडी रो कोनोसी प्रकार एब्जॉर्प्शन हबोनी बा कोनोसी प्रकार डाइजेशन हबोनी बट बॉडी माने जो हमें जो भी माने फूड डाइट कंज्यूम करछु से डाइट को गोटे बल्क प्रोवाइड करिया पे बल्क रो अर्थ कोन जदी सपोज आपण भाबंतु कि बल्क न आसिला देन आपण लागियो जे मो पेट एबे भी भोक लागुची मो पेट एबे भी खाली अछि बुझी परछन ना देन व्हाट विल हैपन यू विल स्टार्ट ईटिंग मोर एंड मोर बहुत समय कोन ना कि फाइबर खांतु कहि कि ओके ओबेसिटी रे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस ओबेसिटी कंडीशंस रे समस्त को डाइट एक्सचेंज बा इंटरनेट ऑनलाइन सब देखिते समस्त को ये कोआ हुए कि नहीं
अपन माने फाइबर्स अधिक कंज्यूम करंतु you eat vegetables, raw vegetables where it contains dietary fibers. फाइबर्स रो अर्थ कोन फाइबर रो एक्चुअली डाइजेशन किछि हुई नाही जदि डाइजेशन हबनी कोनोसी प्रकार न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हबनी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब न हला देन ऑब्वियसली यू वोंट बी आपण जो देह रो जो बॉडी रो जो माने वेट अछि बा जो भी ओबेस कंडीशन अछि दैट इज फर्दर नॉट गोइंग टू बी एग्रीवेटेड राइट तो सेहि पे हमें कहउछु ताको जेमिति हमें डाइटरी फाइबर कंज्यूम कलु एक्जाक्टली से डाइटरी फाइबर हमर बाउल मूवमेंट रे देहरु आउट हे जिवो राइट आ बाउल मूवमेंट पाई मध्य बहुत इंपोर्टेंट होची डाइटरी फाइबर बिकॉज जदि बाउल मूवमेंट जदि फाइबर ठीक भाबरे कंज्यूम करिवेनी एंड यू आर नॉट कंज्यूमिंग द वाटर एडिक्वेट अमाउंट देन व्हाट विल हैपन कॉन्स्टिपेशंस एंड ऑल दिस अदर टाइप ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स गुडा अछि बाउल रिलेटेड प्रॉब्लम्स से सब जिंस हबो ठीक अछि तो दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ योर डाइटरी फाइबर गोटे अलगा टॉपिक भी अछि दैट विल बी डिस्कसिंग डाइटरी फाइबर एंड वाटर इंपोर्टेंस ताको हमें पिरामिड करके देखिबे डिसाइड डिस्कस करियो ठीक अछि अपार्ट फ्रॉम दिस हेमिसेल्युलोज माने पैक्टिन गम्स म्यूसिलेज ए सब गुडा दरकार नै ए गुडा को सब होउची सेल्युलोज रो फर्दर क्लासिफिकेशंस गुडा को सॉरी डाइटरी फाइबर रो फर्दर क्लासिफिकेशंस इज नॉट दैट इंपोर्टेंट आमे जतल डाइटरी फाइबर देखिबा ता इंपोर्टेंस गुडा को डिस्कस करिबा ओके coming to the functions of the carbohydrate this is very important okay what is the importance of the carbohydrate प्रथम कथा होची it provides energy okay carbohydrate रो स्वते सार कहिले हमें बुझुछु सब बेले carbohydrate sorry energy केते एनर्जी प्रोवाइड करूची जति 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हुए प्रॉपर्ली तार डाइजेस्ट हेकी जति एनर्जी एब्जॉर्ब होची इट प्रोवाइड्स 3.4 किलो कैलोरी ऑफ द एनर्जी ओके आउ ता सहित कोन काम करे कार्बोहाइड्रेट हैज ए प्रोटेक्टिव एंड डिटॉक्सिफाइंग ऑफ द लिवर जदि डिटॉक्सिफाई करियार अछि जो माने लिवर डिटॉक्सिफिकेशंस पाई भी कार्बोहाइड्रेट हेल्प करे ओके टॉक्सिक सब्सटेंसेस जहा गुडा जो गुडा अछि से गुडा कोन हबो एई कार्बोहाइड्रेट गुडा को एब्जॉर्ब करबो तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल एक्शंस रिमूव फ्रॉम द लिवर बाय द ग्लाइकोजन राइट नेक्स्ट इज द काहे कि ग्लाइकोजन बिकॉज़ ग्लाइकोजन ही जाय कि स्टोर हुए लिवर रे मु कहि दिले कि एक्सेस जो ग्लूकोज अछि सेटा ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट हबो आ जाय कि लिवर रे स्टोर हबो तो कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड by the heart muscle तो हमर हार्ट मसल मध्ये कार्बोहाइड्रेट को यूज करूची हार्ट एक्टिविटीज में हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शंस और हार्ट जो एक्सपांशन होची कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन में मध्ये एनर्जी रो रिक्वायरमेंट अछि ठीक अछि बिकॉज़ दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस रो अर्थ तार एनर्जी दरकार नै सेमति न हो ताको भी किछि एनर्जी दरकार जेमते हमें देखिबा जतले बीएमआर पढिबा हमें बीएमआर देखिबा व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस तो एतो नॉर्मल जिंस देखिया दरकार नै हम जानि छै मध्ये जेमते हमें you go to sleep still then heart is functioning your brain is functioning your nervous system is functioning your जो भी blood circulation is functioning so ए सब जिंस कोन होची अपन involuntary action तापे मध्ये एनर्जी रिक्वायरमेंट अछि okay next continuous supply of the glucose is essential to the nervous tissue एटा भी देखिबे अपन हार्ट को जेमते रिक्वायरमेंट अछि सेमते नर्वस टिश्यू रो फंक्शनिंग पाई मध्ये नर्वस सिस्टम आ ब्रेन देखो जो एनर्जी रो जो हमें फंक्शन अछि जो एनर्जी हमें एक्सट्रैक्ट करूछु तो एनर्जी जदि कार्बोहाइड्रेट नथिबो देन आल्सो फ्रॉम द अदर कंपोनेंट लाइक द फैट प्रोटीन तार भी बर्निंग हे कि एनर्जी बाहरी पारिबो किंतु नर्वस सिस्टम रो फंक्शनिंग पाई किंबा ब्रेन रो फंक्शनिंग पाई you need the energy from the carbohydrate only so that's why it is very much important next protein next होची आगो कोनती प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन व्हाट इज द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन हम देह रे जो कार्बोहाइड्रेट रु मध्ये एनर्जी बाहरिबो और प्रोटीन रु मध्ये एनर्जी बाहरिबो किंतु कार्बोहाइड्रेट रो काम होची एनर्जी प्रोवाइड करिबा प्रोटीन रो काम होची बॉडी बिल्डिंग रे हेल्प करिबा जदि आपण कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम न करिवे देन कोन हबो देहर प्रोटीन यूज हबो एनर्जी प्रोवाइड करिया पे यदि प्रोटीन को एनर्जी रे यूज करा हेगला देन बॉडी बिल्डिंग ही परिबो so that's why we have to have the carbohydrate consumption आमे सेति खाया दरकार ताकि सेई जो प्रोटीन ता आमे इनटेक करूचे सेटा एनर्जी रे यूज न हे कि बॉडी बिल्डिंग रे यूज हो बुझी परछंती एई जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस ता हला आको आमे प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कहू that is also one of the function of your carbohydrate right so carbohydrate is used by the body in the synthesis of different non essential amino acid what is amino acid
फैट रो जेतले फैट देखिबे तो फैट रो कंपोजिशंस होची सॉरी फैट कोची प्रोटीन रो कंपोजिशंस होची अमीनो एसिड प्रोटीन जेम हम एडी मोनोसैकेराइड प्रोटीन टा बना हेते अमीनो एसिड yes तो प्रोटीन consist of the amino acid तो हम बॉडी रे टोटल 20 नंबर ऑफ अमीनो एसिड रो रिक्वायरमेंट अछि आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड 9 आर एसेंशियल अमीनो एसिड एंड 11 आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड जो रहिला सेटा केवल हम बाहर खाया को पड़िबो बॉडी निजे जनरेट कर पेबो नाही वी हैव टू कंज्यूम इट थ्रू आवर डाइट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस ता विषय डिटेल देखिबा कि एसेंशियल अमीनो एसिड टर्म्स रे फॉर्म माने ता बेसिस रे केमिति डिफरेंट प्रोटीन्स को हम डिवाइड करिचे माने कंप्लीट प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन लाइक दैट हम देखिबा तो एबे बुझंतु नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो 11टा रहिला सेटा बॉडी भितरे सिंथेसाइज हुए तयारी हिजे बट से तयारी करिया पई कोन दरकार यू नीड कार्बोहाइड्रेट okay so that is also another important function next carbohydrate is essential for the oxidation of the fat and excess of carbohydrate is also converted to fat burning time fat को जब हम burn करछे then also it requires certain energy and that energy is extracted from the carbohydrate तो सेति में जब हम कहया fat रो proper digestion होबार अछि then also you need to have adequate amount of carbohydrate और यदि कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा ही गला देन कोन होबा से कार्बोहाइड्रेट परवर्ती समय रे फैट रे कन्वर्ट हो जाय एंड सी जो आमे नॉर्म बेले बेले देखिथिबे कि घर माने केतल भी समस्त पेडा हिथियो कि खाई पी की बहुत दिन टी बसी गले टिके कोनोसी प्रकार एक्टिविटी न कले तो हठात टिके ओजन बढ़ी जाय ओके आउथरे जदि किछि एक्टिविटी आमे करिया स्टार्ट करू बा टिके एक्सरसाइज वगैरह करू देन आम आउथरे नॉर्मल बैक ही जाय बहुत अल्प समय भीतर किंतु जनरली से जो मानक बेली पाखरे बहुत फैट जमा हुए स्टार्ट हुए हाउ हार्ड यू ट्राई स्पेशली मेल केस रे कहूची तो हाउ हार्ड यू ट्राई से टिके फैट ना जनरली माने डाइजेस्ट हुए नहीं व्हाई बिकॉज दैट इज ए फैट कन्वर्टेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट जो फैट रे जो जोटा कन्वर्ट होता है दैट इज वेरी हार्ड टू बर्न so you have to do specific type of activity then only you can burn it out right next carbohydrate हम कहि सरली already carbohydrate provides a flavor and variety to the diet normal जिंस okay so these are the different type of carbohydrate functions coming to the source of carbohydrate विषय already हमें source देखि सारिचे कि monosaccharide कोठी मिलुची monosaccharide रो glucose कोठी मिलुची galactose sorry fructose कोठी मिलुची आपन को maltose कोठी मिलुची सब देखि सारिचे just again if you want to club it and see the major sources are cereals millets sugar jaggery roots and the tubers pulses dry fruits and milk sources likhini you can add the milk sources also ठीक अछि so this is a broader perspective of your carbohydrate जेतल carbohydrate आपण पुछिले let us go to the understanding of the digestion of carbohydrate okay that will be easy to understand ठीक अछि सी प्रथमे बुझंतु एटा होची आपण चैप्टर 3 रे अछि तो 1 सेकंड there are three things one is a digestion another is absorption another is the metabolism okay कहि परियो what is the difference what is the basic understanding you got from the three different terminology डाइजेशन अर्थ कोन एब्जॉर्प्शन कोन मेटाबॉलिज्म कोन डाइजेशन हला सर बॉडी जो हमें फूड खाउ सेटा ब्रेक डाउन हे कि सिंपलेस्ट फॉर्म को जेतो फॉर्म Yes, होला डाइजेशन good, तादर very good. एनर्जी जोटा आसो एटा एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म हला बाउल मूवमेंट ता जो फर्स्ट ठीक कहले सेकंड टा कोन हुए एब्जॉर्प्शन रो अर्थ होची एनर्जी आसी बनु सेही पर्टिकुलर जिंसटा से जो सिंपलेस्ट फॉर्म टा कन्वर्ट हैला बर्तन से सिंपलेस्ट फॉर्म टा एबे भी हमरो खाद्य नळी भीतर अछि द एलिमेंटरी कैनाल्स भीतर अछि गॉट माय पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंटरी कैनाल इन द डाइजेशन प्रोसेस रे एलिमेंटरी कैनाल भीतर सिंपलेस्ट फॉर्म रे तो कन्वर्ट ही गला किंतु एलिमेंटरी कैनाल भीतरु वर्तमान बॉडी भीतर को सेटा इन्फ्यूज करिया दरकार बुझि परछन नाही कुछ ना एब्जॉर्ब करिया दरकार बॉडी को बुझि परछन तो एब्जॉर्ब करिवो ब्लड रे से मिसिबो ब्लड ताको ट्रांसपोर्ट करी कि नबो स्टोरेज प्लेस को आ सेठी से स्टोर ही कि रही सिंपलेस्ट फॉर्म रे सो दैट जेते बेले हमर एनर्जी रो रिक्वायरमेंट अछि से सिंपलेस्ट फॉर्म ता बर्न हबो
आ एनर्जी बाहर जो से बर्निंग रो जो एनर्जी बाहर जो प्रोसेस हला ताको हमें मेटाबॉलिज्म कहू आम बॉडी कहूँ ना बहुत समय कि नहीं जार मेटाबॉलिज्म भल अच्छी से बेसी मोटा हुए बिकज जो भी जिन से कंज्यूम करते से गुड़ा से बॉडी रे बर्न हो जाए राइट clear about the three terminology if you have any doubt any conflictions then you can tell me otherwise we'll move ठीक अच्छे राइट सॉरी वन सेकंड हाँ तो कौन है डाइजेशन सो मु द डेफिनेशंस आपन कहिदले विल बी गिविंग द डेफिनेशंस टू सो व्हाट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन केमती हुए जेतोला हमें कोनोसी कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करछु इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड नथाय तो द डाइजेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड बिगिंस इन द माउथ रे ही स्टार्ट हुए केमिति फास्ट हो जे मैकेनिकल चुइंग करू तको हमें मैकेनिकली तको हमें चोबोचु ता फल रे तार गोटे ब्रेक डाउन होची बट अगेन माउथ रे आम कोन अछि सलाइवा ग्लैंड अछि तो सलाइवा कोन करे से भितरे गोटे यू कैन सी ओवर हियर इफ यू दिस सलाइवरी ग्लैंड्स अछि कोटी माउथ रे सलाइवरी ग्लैंड गोटे एंजाइम रिलीज करे जोडा को हमें सलाइवरी अल्फा एमाइलेज कहूछु ताको हमें टाइलिन मध्ये कहि परिबो सेम यू कैन इंटरचेंज सलाइवरी एमाइलेज जो कथा कहूछु केवल एमाइलेज कथा कहे एमाइलेज भितरे गुडाए एंजाइम था से भितर गोटे एंजाइम होचे टाइलिन ओके यू कैन राइट टाइलिन और सलाइवरी अल्फा एमाइलेज पी टाको साइलेंट रखनी से टाइलिन कहूची मु ठीक अछि तो इट इज द सोर्स कोन माउथ रे बाहरला माउथ रे अछि सलाइवरी ग्लैंड रिलीज कला सलाइवरी अल्फा एमाइलेज और टाइलिन कहा ऊपर वर्क करिवो स्टार्च ऊपर काम करिवो स्टार्च अर्थ कोन पॉलीसैकेराइड वर्तमान सेटा डाइजेस्ट है कि कौन हम जो ये एंजाइम ता ऊपर वर्क करिवो से कौन करिवो माल्टोज रे ताको कन्वर्ट कर दो ठीक अछि एटा गुटे प्रोसेस कला बर्तन माल्टोज रे ही गला ना तो एटा वन सिंपली मोनोसैकेराइड कन्वर्ट ही गला नेक्स्ट बर्तन माउथ रे सरला काम माउथ रो बर्तन भीतर को पसला कोटी की स्टमक रे कौन हबो जेतबेले फूड आसीबो बिकॉज जो स्टार्च ता मुह को आसिला स्टार्च सपोज 100 यूनिट आसिला पार्टी भीतर को all the 100 unit not going to be converted into the maltose because alpha amylase बहुत कम समय पे काम करे because आपण पार्टी भीतर तेमती घंटा घंटा धरी फूड रखु नाती ना जो बेले और छाड़ले पेट भीतर राइट तो a small amount of the starch is converted into maltose but a larger amount of starch is still intact सेही स्टार्च गुडा को बर्तन कोटी गसला पेट भीतर गस पेटोरे को एसिड रिलीज हबो यू विल बी रिलीजिंग द गैस्ट्रिक जूस भितरे कौन थाए HCl थाए सी HCl कौन करे गैस्ट्रिक जूस कौन करे प्रथम कथा होची जो बैक्टीरिया वगैरह थाए ना ताको तो किल कर दिए ठीक अछि बैक्टीरिया को किल करिवा परे देन अगेन सम गोटे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ छोटो अमाउंट ऑफ स्टार्च इज अगेन फर्दर बाइफर्केटेड इनटू द फ्रुक्टोज एंड द गैलेक्टोज और गैलेक्टोज को मते सी माने कन्वर्ट कर दिए राइट बर्तमान आसीबो स्मॉल इंटेस्टाइन भितर को स्मॉल इंटेस्टाइन भितर कौन हुए कि आपन को जो स्टार्च बिकॉज़ सी इफ 100 यूनिट इज एंटर टू द माउथ स्मॉल यूनिट माने किछि छोटो पार्ट ऑफ द टोटल स्टार्च इज कन्वर्टेड इन द माउथ इटसेल्फ किछि पार्ट आपन को स्टमक को ऐसे की कन्वर्ट हला सिंपलेस्ट फॉर्म को ठीक अछि एटा तो सिंपलेस्ट फॉर्म को हेई नै पर्यंत नेक्स्ट जो किछि बंची गला जो मेजर पोर्शन दैट विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च इटसेल्फ जेतोले स्मॉल इंटेस्टाइन को जीवो स्मॉल इंटेस्टाइन रे जेमती मुहरे पडिथिले हम पार्टी रे गोटे बाहरथिला एंजाइम दैट इज कॉल्ड द सलाइवरी अल्फा एमाइलेज सेंटी पेट माने स्मॉल इंटेस्टाइन रे पैनक्रियाटिक एमाइलेज गोटे एसिड रिलीज हबो ठीक अछि ए पैनक्रियाटिक एमाइलेज कोन करे ताको माल्टोज रे कन्वर्ट करती काहाको स्टार्च को वर्तमान आपण पाखरे कोन रहिला माल्टोज रहिला लैक्टोज रहिला एंड सुक्रोज रहिला ठीक अछि तो सी यू विल से लाइक ए लैक्टोज और सुक्रोज आसिला कोठी लैक्टोज और सुक्रोज एठु आसीबो ए जो माल्टोज आपण फर्दर डिवाइड करिवे ना जस्ट वन सेकंड गुड Okay, am I audible?
गोटे से कंफ्यूज हो गले बहुत अधिक ए टिके पार्ट एमती ही अछि जैसा आई सो इट अगेन because we'll try to remember everything here only. See, make it simple thing. हमें कौन खाइले स्टार्च खाइले स्टार्च बर्तन फर्स्ट आसला मुह को मुहर हमें कौन कले ताको फर्स्ट मेकानिकल चुइंग हला मेकानिकल चुइंग हो फल रे माने मुहर हमें ताको चोबेले चोबिया फल रे कौन हला से सिंपलर फॉर्म को कन्वर्ट हो गला ठीक अछि माने सिंपलर माने छोटो छोटो पार्टिकल रे कन्वर्ट हला बट एबे जे से फूड तो स्टार्च ही अछि ठीक अछि सेही जो छोटो पार्टिकल्स गुडा को ऊपर कौन पड़िला the enzyme that is secreted it is called the salivary alpha amylase or tyrin जहां मन रुकचन रखो ठीक अछि वर्तमान से salivary alpha amylase सहित मिसिबा परे से कोन करूची माल्टोज रे कन्वर्ट होची बट एटा ना केवल 5% ऑफ द स्टार्च जते स्टार्च हमें खाइले तार केवल 5% नेक्स्ट इट गोज टू स्टमक बटन स्टमक को जते बळे जाउची स्टमक बाकी 95% आ ऊपर कौन रिलीज हबो द एंजाइम इट इज गोइंग टू रिलीज इज द गैस्ट्रिक जूस रे कौन थाए HCl थाए एंड यू जस्ट लीव इट तो बेसी कंफ्यूजन करिया नी म आपन फर्दर सिंपलीफाइड करिके आ गोटे देबी जस्ट लीव इट फॉर द टाइम बिंग गैस्ट्रिक जूस कौन करिवो से जेमिटी आपनकर जो जिंस आपन खाइथिले जो माने ए जो स्टार्च जो थिला से स्टार्च को ही स्टार्च ऊपर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह थिबो ताकू से किल कर दो ओके दिस मच यू विल रिमेंबर एटा को छाड़ दियंतु बिकॉज़ इट विल मेक यू मोर कंफ्यूज्ड तो बर्तन आपण पाखे कोन रहिला यू हैव स्टार्च कहीं स्टार्च तो एबी भी 95% अछि प्लस एट वस्तला माल्टोस एती ठीक अछि क्लियर Yes, sir. ए जो गोटे कंपोजिशन हला ए दिटा जो हमें दीटा को पार्ट मिसी के अछि ताको हमें चाइम कहिबा CHYME चाइम राइट ए चाइम बर्तन कोठी के एंटर करियो नाउ इट एंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक रो काम सरला स्टमक को भीतर बसला बर्तन स्मॉल इंटेस्टाइन रे ए चाइम एटी हमें स्टार्च लिखियानी बर्तन हमें ताको चाइम लिखिया टाइम ऊपर जेतबळे पैनक्रियाटिक एमाइलेज पैनक्रियाज रु गोटे जूस बाहरिबो पा एंजाइम बाहरिबो दैट इज पैनक्रियाटिक एमाइलेज जेतबळे वर्क करिवो जे कोन कन्वर्ट करिवो गोटे तो माल्टोज थिला ना ऑलरेडी से माल्टोज बाहरिला ता सहित माल्टोज सहित कोन बाहरिबो लैक्टोज बाहरिबो आउ सुक्रोज बाहरिबो ता अर्थ all the three disaccharide is you got all the three type of disaccharide from the chain in the small intestine इति पर्यंत समस्ते बुझी पारले any confusion till this Yes. point Yes, sir. No, sir. ठीक अछि वर्तमान हम जो तीनटा डाइसैकेराइड बाहरला गोटे होची माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज तो गोटे गोटे माल्टोज को देखंतु आ ऊपर जो एंजाइम एक्ट जो बहुत इजी माल्टोज ऊपर माल्टेस एक्ट करिवो कोन प्रोवाइड करिवो ग्लूकोज रे कन्वर्ट हो 2 नंबर ऑफ ग्लूकोज ऑलरेडी में देखिथिले तापर असला लैक्टोज ऊपर लैक्टेज सेम TA तो ओ टा ए ही जो केवल दैट्स ऑल लैक्टेज एक्ट करिवो कोन प्रोवाइड करिवो ग्लूकोज और गैलेक्टोज करिवो सुक्रोज ऊपर सुक्रेज गोटे एंजाइम से एक्ट करिवो कोन प्रोवाइड करिवो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रोवाइड करिवो एति क्लियर थिला समझते ता अर्थ our digestion process 80 complete hela because whatever starch we have consumed in the form of the polysaccharide now converted into your monosaccharide because glucose galactose and fructose three monosaccharide we got okay so simple जेतबळे आपण किछि पढिबा एमति टाइप गोटे रफ डायग्राम कर दे आई एम वेरी बैड एट मेकिंग डायग्राम्स but still something you can do it is a mouth in the mouth itself you can get the salivary release okay starch को maltose से convert करछि
एठी आपण स्टोमक हला स्टोमक रे कोन आपण देखि देबे एठी HCl रिलीज होउची बा गैस्ट्रिक जूस ता काम कोन टू किल द बैक्टीरिया कमिंग टू द हियर यू विल गेट द पैनक्रियास जोटा कि आपण परवर्ती समय रे स्मॉल इंटेस्टाइन रे रिलीज करिवो this is the small intestine and this is the large intestine what is happening in the small intestine this is happening in the small intestine starch काटिबा एडी हम चाइम लिखिबा एट लिखिबा से माने कोन से लिखितले हम पैनक्रियाटिक एमाइलेज एडी माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज बुझी पाले समझते ए फिगर रो ना देबे से बोले right done with this Yes, sir. okay coming to the next one that is called the absorption so absorptions केमती होउची because absorptions body एबे simple form रे हेगला simple form रे convert हुआ परे ताकू body भितर को माने आपण खाद्य नळी भितरु स्मॉल इंटेस्टाइन भितरु बर्तन बॉडी भितरु डिफ्यूज होबा दरकार से डिफ्यूज केमती हबो ताकू आमे केमती कहू बिकॉज़ स्मॉल हम जो इंटेस्टाइन रहला स्मॉल इंटेस्टाइन रहला से स्मॉल इंटेस्टाइन भितरे किछि कैपिलरी वैलीज थाए व्हाट इज कैपिलरी वैली एमती टाइप रो किछि रीज टाइप जो खाद्य नळी भितरे एमती किछि रिजेस थाए से रिजेस थ्रू देई कि से डिफ्यूज कर जाय क्वाडो खाद्य नळी बाहर कोन थाए ब्लड्स अछि दिस इज ब्लड इज फ्लोइंग हियर and blood is flowing here so it will diffuse into the blood once it is diffused into the blood ताकू से जो ब्लड भितर पसी गला ताकू हमें कोन को पोर्टल सर्कुलेशन ए ब्लड भितरे जेतले पसी गला ताकू हम पोर्टल सर्कुलेशन को so by the way of capillary release the simple sugar entered into the portal circulation and now from the portal circulation ए रक्त देई की से कोटी की जाए it is transported to the liver okay तो फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज जो हमें देखिले फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जनरली कौन करे दीज आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लिवर रे ताको हमें ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट करके स्टोर कर दो एंड द ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज रे केतोल कन्वर्ट जेतोला हम बॉडी रे फर्दर एनर्जी रिक्वायरमेंट है जेतोला हमें स्टार्वेशन करू छु जेतोला हमें भूख रे रहू छु जेतोला हमें व्हाटएवर ठीक अछि तो जेतोला हमें बॉडी रो रिक्वायरमेंट अछि ग्लूकोज रो ग्लूकोज हमें सेतोल खाई न थाउ छु देन this stored glycogen is converted back into the glucose ठीक अछि मोनोसैकेराइड जो डिफ्यूजन होउची तो ट्रांसपोर्टेशन होउची एटा बहुत मेथड रे पारे थ्री इंपोर्टेंट मेथड डिटेल्स ऑफ द मेथड्स आर नॉट रिक्वायर्ड जस्ट रिमेंबर द नेम्स इट कैन बी डिफ्यूजन इट कैन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ठीक अछि डिफ्यूजन ए दिटा होउची कोन डिफ्यूज करिवो केमिति एपटे सपोज भावंतु पोर्टल सर्कुलेशन अछि एपटे आपण खाद्य नळी अछि सपोज इट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज योर पोर्टल सर्कुलेशन ओके एग्जांपल पे कहूची ए भितरे सपोज गोटे अछि आपणकर ग्लूकोज फसे को हबो कोनोसी प्रकार एमकी एक्शन रे ए ग्लूकोज टा आछिबो एपटे आ ए पट साइड गोटे कंपोनेंट गोटे आयन आसी जीवो स्मॉल इंटेस्टाइन भितरु को ए जो प्रोसेस ता हुए ना ताको हमें डिफ्यूजन कहू माने गोटे माने जस्ट एक्सचेंज ऑफ थिंग्स ओके ताको हमें डिफ्यूजन कहू इधर डिफ्यूजन रे ही पारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रे ही पारे बा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन केतेबेले जेतेबेले एई प्रकार ट्रांसपोर्टेशन रे किछि एनर्जी खर्च हुए एनर्जी दरकार पड़े ओके डिफरेंट टाइप ऑफ माने रिक्वायरमेंट समय डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुए नॉट दैट इंपोर्टेंट जस्ट वन थिंग यू कैन रिमेंबर ग्लूकोज आउ सोडियम आयन ए दीटार जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अछि सेटा सेम दे शेयर द सेम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो सेहिति पई ए जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहली एटी ए पर्टिकुलर एक्शन ता ताको हेल्प करे बिकॉज़ ए पोर्ट साइड जदि सपोज ग्लूकोज आसिला बॉडी भितरु माने पोर्टल सर्कुलेशन को आसिला फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन देन स्मॉल इंटेस्टाइन भितरु को सोडियम आयन एंटर कर जिवो हां हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ए डिफ्यूजन टाइप रो माने कंफ्यूज न करिया पे मु केवल सेती कहूची आपन को मन रखंतु नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शंस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट माने अफेक्ट करूची आपन सर प्लीज सेंड द पीपीटी हां एटा तो this note will be uploaded in your study section जो आपनकर ऐप अछि ऐप रो स्टडी सेक्शन रे अपलोड हे साथियो काली तो सेंड कर देथली
if it is not yet uploaded, then do let me know. I'll remind the technical persons one more time. ठीक अछि. तो factors affecting the absorptions कौन factors अछि जोटा हम बॉडी रे केते कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन सब ताको डिटरमाइन करछि. गोटे होछि आमे केते कार्बोहाइड्रेट हम बॉडी भितर को एंटर करछि, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन भितर को. ठीक अछि. जदि अल्प एंटर करछि तो ठीक अछि, सब गुडा को डिफ्यूज हे जिवो. जदि बहुत अधिक मात्रा रे एंटर करि गला देन the rate of diffusion will be reduced because एतिकी सोडियम आयन भी तो थिबा दरकार पुणी ना फैसिलिटेट करिया पे से मानको. ओके, so it is the rate of entry of the carbohydrate into the small intestine. Next is the type of the food mixture. जो खाद्य में खाउछु सेठी को टाइप रो फूड रो मिक्सचर्स अछि, कार्बोहाइड्रेट अधिक अछि, प्रोटीन अधिक अछि, डाइटरी फाइबर्स अछि, तापर मते निर्भर करे. स्मॉल इंटेस्टाइन जो अछि तार मेम्ब्रेन रो कंडीशन जदि से जो हमें देखिले आमे जो कैपिलरी वैली कथा देखिले, जदि कैपिलरी वैली रो कंडीशंस भल नथिबो then how it will be transported. ठीक अछि. डिफ्यूज केमति हबो भल ही परिबो. नॉर्मल एंडोक्राइन एक्शंस जनरली जानथिबे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो बा थायराइड ग्लैंड्स हो, ए ग्लैंड्स रो हार्मोन सिक्रेशंस वे, ए हार्मोन रो सिक्रेशंस गुडा को आपन को बॉडी रो मेटाबॉलिज्म को माने से माने कंट्रोल करथि. ठीक अछि. थायराइड प्रॉब्लम को सुनिथिबे, थायराइड हार्मोन रो जति हमर जो भी माने डेफिशिएंसी केस रे केमति आपन को प्रॉब्लम्स अछि मोटा ही जानथि लोक. ठीक अछि. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज ऑफ द मील फ्रीक्वेंसी. मो एदिन आपन कहउतरी फर्स्ट पॉइंट सहित जदि आपन एबे मीठा खाइले आउ टी परे 15 मिनिट हिची आउ टी चॉकलेट खाइ देबे, आउ 5 मिनिट हिची आउ गोटे कोन मीठा जिंस खाइ देबे, देन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस विल ऑब्वियसली रिड्यूस बिकॉज़ बॉडी रे ऑलरेडी आपनकर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हाई अछि. ओके, नेक्स्ट इट इज ए जिंस हमर गला ट्रांसपोर्टेशन. कमिंग टू द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म केमती होची. मेटाबॉलिज्म माने कोन? इट इज न्यूट्रिएंट इज नाउ यूज्ड, न्यूट्रिएंट को यूज करके आपण कोन कले एनर्जी रे कन्वर्ट कले. नाउ इट इज यूज्ड फॉर द एनर्जी. ठीक अछि. तो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ही पारे जेमति कि ग्लूकोज आसिला, ग्लूकोज मु जेमति आपण कहितली ग्लूकोज शुड बी मेड एसेंशियल. किछि हमर सेल्स रह जेमति नर्वस सेल रहिला, ब्रेन सेल रहिला, ताकू केवल ग्लूकोज रु ही एनर्जी दरकार. ते लिखाई छी although the fat can be oxidized to release energy, certain cells like the nervous cell and the brain cells or the tissues cannot function without the glucose from the carbohydrate. Carbohydrate रो ही ग्लूकोज से मानको दरकार. ठीक अछि. तो सेठी में जो भी ग्लूकोज अछि दैट रेडिली कन्वर्ट हो जाए बा एनर्जी रिलीज हो जाए ताकि एई टाइप रो जो हमर माने वाइटल ऑर्गन्स रो जो रिक्वायरमेंट अछि ताको फुलफिल करिया पाए. नेक्स्ट इज ग्लूकोज अंडरगोस ऑक्सीडेशन विथ द हेल्प ऑफ द एंजाइम. किछि एंजाइम्स माने हेल्प रे सेरा ऑक्सीडेशन हुई. ऑक्सीडेशन हा फल रे कोन बाहरे माने आमे जानि छै जिंस जो एनर्जी जतला आमे कोनोसी प्रकार ऑक्सीडेशन होउची बा मेटाबॉलिज्म होउची, मेटाबॉलिज्म रे कोन बाहरे कार्बोहाइड्रेट बाहरे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहरे, वाटर बाहरे और हीट बाहरे. एति आमे तो जानि छै जिंसटा को जो आमे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल करू जो एक्सेल ता कोठी करछु बिकॉज़ ए जो टाइप रो जो हमरो माने जो सेल्स गुडा को अछि, सेल्स रो जतबेले एनर्जी रिक्वायरमेंट हुए तो जो आपण स्टोर्ड एनर्जी अछि हम देहरे सेटा बर्निंग हुए. से बर्निंग प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरे और वाटर बाहरे और हीट बाहरे. ठीक अछि. कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल प्रोसेस रे जो निश्वास प्रोसेस रे बाहरी जैसे इंसोटा, वाटर तो बॉडी रो रिक्वायरमेंट हुए, देन बॉडी रो बाहर को भी बाहर जाए. हीट जो हीट ता बाहर छै केस रे से हीट टाको हम देहरे गोटे एटीपी अछि जोटा हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहूछु, से ताको स्टोर कर दिए इन द फॉर्म ऑफ से एटीपी को हमें एनर्जी करेंसी कहूछु. से स्टोर करके रखि थाए जेतेबेले जो ऑर्गन को एनर्जी रे रिक्वायरमेंट अछि सेतेबेले ताको प्रोवाइड करे थाए. तो एटीपी कैन बी ब्रेक डाउन टू रिलीज द एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जदि गोटे पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमें टोटली ऑक्सीडाइज करिया ठीक भाबरे तार बर्निंग हबो, देन 36 नंबर ऑफ एटीपी बाहरिबो, 6टा कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिबो और 6टा वाटर मॉलिक्यूल बाहरिबो. राइट. इटा गोटे इटा कुछ हमें डायरेक्ट यूटिलाइजेशन कथा कहूचे. नेक्स्ट इज द कन्वर्सन इनटू ग्लाइकोजन. मु जो जिंसटा आपन को कहउतली बॉडी रे जेतेबेले एक्सेस मात्रा रो ग्लूकोज आछे सेतेबेले सब ग्लूकोज रो आवश्यकता नथिबो. एक्सेस ग्लूकोज कंपोनेंट कोन हुई कि ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट हो जाए बिकॉज़ सेठी इंसुलिन ऊपर काम करे आउ सेही जो कन्वर्टेड ग्लाइकोजन जो रहिला सेटा हम बॉडी रे स्टोर हे कि रुहे. कोटी स्टोर हबो, लिवर रे स्टोर हबो, अदरवाइज मसल रे स्टोर हबो. लिवर ग्लाइकोजन कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू द माने ग्लूकोज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. किंतु मसल रे जो ग्लाइकोजन स्टोर हुए तो जो ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड इन द मसल कैन बी कन्वर्टेड टू यूज एनर्जी, सप्लाई एनर्जी ओनली टू मसल इटसेल्फ. मसल रे जो ग्लाइकोजन स्टोर हिची बॉडी रो अन्य माने अन्य पार्ट को
से एनर्जी प्रोवाइड करिवनी केवल मसल को ही प्रोवाइड करिवो ठीक अछि नेक्स्ट अराउंड 150 केते स्टोर हुए 150 grams of the glycogen it is stored in the muscle and whereas around 90 grams of the glycogen can be stored in the liver okay generally केते समय जणे जदी 10 to 18 hours पर्यंत फास्टिंग करूची it is sufficient amount of the glycogen to provide necessary glucose when it is starving right फाइनल जिंसो मो ए जिंसो भी कहि सच्चे अपन कन्वर्जन इनटू द फैट जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हम इनटेक करछु बहुत समय रे सेगुडा को फैट रे कन्वर्ट हे जे और स्टोर हुए और these fats are very difficult to burn okay कोटी स्टोर हुए it stores in the adipose tissue of our muscle right बुझी पारले समझते इति जे any doubt till this point no ठीक अछि तो it's 9:18 okay ठीक अछि तो आज एठी एंड करिवा जदी पॉसिबल हबो आई लेट यू नो फॉर द आज इवनिंग रे तो डिफिकल्ट